Okay, so let us start today with question number 6. Let's see how the sum is different from the other sums that we have done till date. A fire broke out in the warehouse of Mercantile Traders Limited, okay, on 30th September, okay, 2050. The company desires to file a claim with the insurance company for loss of stock. ठीक है, okay. From the following information, prepare a statement showing the amount of claim. So this is your step 1, right? Yeah. The last account of company was prepared on 31st 12 2014. Okay. So stock on 31st 12 2014. So this is my closing stock. Okay. So फर्स्ट जनवरी 2015 के लिए ये बन जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. सो याद रखना, फॉर फर्स्ट जनवरी 2015 this is going to be my opening stock. Don't forget this point. Next, daters. Yeah, we are first time doing daters now. हमने अभी तक एक भी सम में daters नहीं लिया था calculation में, right? तो opening stock of daters, right? This will be same. First 2015. This is my opening balance of daters. ठीक है? Next, sundry debtors as on 30th September 2015. ठीक है. तो ये कौन से डेटर्स है मेरे? ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स. ठीक है. So are you guys understood the difference in today's sum? Sundry debtors. Clear everyone? Is this clear to everyone? Okay. Next, cash received from debtors. So what will be the journal entry? Cash account debit to debtors. ओके, ये डेटर्स अकाउंट में जाएगा. ठीक है. परचेजेस फ्रॉम 1st January 2015 to 30th September 2015. So this is a period of less than 12 months. So what am I going to make out of this? Memorandum trading account. So this will be memorandum trading account debit side. Okay, and this opening stock is also then applicable to memorandum trading account debit side. Am I clear to everyone? Is the concept clear? Okay. And then you have a gross profit percentage, which is already given to you in the question. Okay. 25% on sales. So do we have to prepare a trading account? Trading account is required for 2014. Do you have to prepare a trading account for 2014? Students? No, we don't have to. Yeah, very good, Diksha. Yeah, Khushi, very good. Yeah, we don't need it ना, because information ही नहीं चाहिए हमें. हमारे पास जीपी परसेंटेज है ना 25% लास्ट ईयर का, वही हम इस साल उसको एप्लीकेबल करेंगे. ठीक है. ओके फाइन. तो लेट अस स्टार्ट विद द सम. तो हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एंड वी विल मेक अ डेटर्स अकाउंट ऑल्सो इन दिस सम. ओके. सो लेट अस स्टार्ट. Let us prepare a memorandum trading account, a small one, not a big one. Not much entries are here. Yeah. Okay. So start. Give the heading memorandum trading account and mention the period also, the time period. That is also important. Okay. Because that shows it's a period of less than. Yeah. So give the heading memorandum trading account. Okay. टाइम पीरियड इज फर्स्ट 2015 टू आग कब लगी 30th September. तो 30th September 2015. ओके. स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच 1,20,000. तो राइट ईयर 1,20,000. नेक्स्ट क्या है? परचेजेस 10 lakhs. तो राइट ईयर परचेजेस. ओके. हाउ मच इज द वैल्यू? 10 lakhs is the value. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? Sales we don't have, but we know from datas we can calculate sales. Agreed? Everybody agrees to this? From datas we will calculate sales. ठीक है. तो let us make a datas का account, a small datas का account.
Okay, yeah, right now, yeah, make it like this. Okay, write working note. You can mention this as a part of your working note also. Okay, so just write here working note number 1. Okay, datas, datas account. Okay, so you have opening balance of datas. Yes, so opening balance कितना दिया है? 3,20,000. 3,20,000. Then you have closing balance of data. So right here by closing balance, just a minute. Yeah, by closing balance. So closing balance of data is how much? 2,40,000. Okay. Next क्या है? Yeah, cash received from data. So cash account debit to data. So cash account I'm not preparing. So I'll give the second effect in data by cash account करके as cash received from data. How much? 11,52,000. So 11,52,000. Okay. Which entry is this? This is cash received from data's entry. Am I clear till here to everyone? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Everybody is understanding till here? Okay. Okay, so sales is not given in the question, but sales we can find from the question. Why? Because data's information is given, and data's are as good as credit sales. Okay, yeah. So close data's account now. Data's account close karo. So 11,52,000 plus 2,40,000 is how much? 13,92,000. So right here, 13,92,000. Close the ledger. I mean balance your ledger. Minus 3,20,000. So my answer is 10,72,000. So this is my credit sales. Okay. Yeah. So right here to credit sales. So this is the journal entry of credit sales. Okay. इधर mention कर लो 10,72,000 and you can write here working note number 1. Okay. Is this clear to everyone? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? How to calculate credit sales if information is not given in insurance? Okay. Fine. डन विद द सम हो गया. अब क्या चाहिए हमको? ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 25%. तो अभी चलो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो. 2 GP. How much? 25%, right? 25% of what? 25% of obviously sales. So 25% of 10,72,000. Okay. Yeah, calculate this. 10,72,000 ka 25%. My answer is 2,68,000. Okay. Then close this memorandum trading account. Isko close karo. So when you close this, yeah. So 2,68,000 plus 10 lakhs, 10 lakhs plus 1,20,000. So 13,88,000. 13,88,000. Okay. Then close this ledger minus the credit side 10,72,000. Okay. 13 lakh, sorry, 3,16,000 is my answer. Okay. So what is this? This is actually closing stock. But for memorandum trading account, we don't call it closing stock. We call it what? Buy stock on date of fire. Okay. Buy stock on date of fire. Okay, very good, Kushi. Okay, so this is my final answer. Okay, this one, 3,16,000. Okay, fine. Now start with your step 1. Okay, so I'm writing it here. Right down. Step 1, what are we going to do? We are going to calculate statement of loss. Yeah, actual loss, yeah, loss of stock, whatever you call it.
Okay, so write down statement of actual loss. Okay, let's prepare this statement of actual loss. Okay, start with stock on date of fire. Stock on date of fire. My answer is 3,16,000 from memorandum trading account. Then less salvage. Okay, so how much is my salvage? Great. Salvage is not given in the question, so put a dash nil. Okay, so this is only my loss, actual loss. Okay, actual loss is how much? 3,16,000. Okay, policy value. Policy value is also not given. Very good. Okay, so write down step 2. Step 2, calculation of claim. Calculation of claim. Okay, so write down in this question policy value is not given. Okay, so therefore no average clause is applicable. मतलब you cannot use that formula. No average clause is applicable. तो अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो हम कैसे क्लेम निकालेंगे? तो तभी क्लेम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस या लॉस ऑफ स्टॉक. दे बिकम इक्वल. So my answer is 3,16,000. This is the final answer. Am I clear? यहाँ तक सबको समझ में आया? Okay. So the sum is done. Okay. Clear about this? Yeah. Question number 6. Is it clear, everyone? Just acknowledge in the chat box. And please note down all these things. Just don't sit idle at the other end. Okay. Now we will take a different sum. Okay. Okay, fine. Thank you, students. Now let us move on to a different sum. Okay. ये वाला हो गया. Let us do this sum. Question number 7. Okay. Let us move on to this. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Question number 7. Okay. It's easy, not that hard. Yeah. Diksha, yeah, you're talking about that cash received का entry. Okay, just a minute. I'll take you to that question. Yeah, ये वाला ना कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नलाइज करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बराबर. तो कैश अकाउंट हमको नहीं बनाना है, हमें चाहिए ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन काम का ही नहीं है हमारे लिए. कौन सा इन्फॉर्मेशन काम का है? डेटर्स. क्यों? बिकॉज उससे मुझे सेल्स का फिगर मिलेगा, राइट? तो मैं सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाऊंगी ना. आई विल ओनली शो वन इफेक्ट ऑफ दैट एंट्री बाय कैश. Okay, because it is affecting my credit sales ka answer, so I will consider only that. Okay, clear, Diksha? Okay, chalo, great. So now let us come to this question. Yeah. Okay, chalo, start with this. Balu traders have given a fire insurance, have taken a fire policy of 4,80,000. Okay, तो ये आपका policy value है. ठीक है? Yeah, this is your policy value, 4,80,000.
A fire occurs on 31st March 2015 and the stock was destroyed with the exception of the value of 1 lakh 2480. So anyone can tell me what is this 1 lakh 2480? ये कौन सा फिगर है? ये 1 लाख 2480 ये कौन सा फिगर है? ये तो पॉलिसी वैल्यू है, ये वाला 4 लाख 80. ये 1 लाख 2480 ये कौन सा वैल्यू है? एनीवन? या वेरी गुड दीक्षा. या दैट्स द सैल्वेज वैल्यू. वेरी गुड. तो ये मेरा सैल्वेज है. ओके. नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31st 12 2014. ओके, दैट मीन्स 1st January 2015 को दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक. ओके. या ठीक है. नेक्स्ट, परचेजेस टू द डेट ऑफ फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. तो ये भी कहाँ जाएगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक. करेक्ट. Then sales to date of fire, the memorandum trading account. Now what does this indicate? It indicates 1st January 2015 से लेके 31st March 2015, the day when the fire occurred at the godown. Okay. Same is applicable for year 1st January 2015 to 31st March 2015. So they are speaking about that. Okay. Purchase to the date of fire and sales to the date of fire. 7 lakh 80 and 5 lakh 40. Okay. Okay. Carriage inward, we will see. Okay. Carriage inward is a part of purchase. So if you want, you can add it to purchase or you can show it separately under memorandum trading account debit side. It's up to you. Okay. You can add to purchase also and you can show it separately also. Okay. Both the ways are correct. I will show it separately. Memorandum trading account debit side. Okay. Clear? Then commission paid on purchase. This is also an expense. ये भी कुछ नया है हम कर रहे हैं. कमीशन पेड ऑन परचेज. ओके. सो दिस विल बी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. एंड हाउ मच इज माय परचेज? 7 lakh 80. So 7 lakh 80 पे I will calculate 2% of that. Okay, fine. Next, rate of gross profit on cost. Okay, fine. So gross profit percentage is given but on cost, जबकि gross profit percentage is always on sales. Okay, so this is the new part in the question. ये थोड़ा अलग है. हमने अभी तक जितने भी सम्स किए, ग्रॉस प्रॉफिट वाज ऑलवेज ऑन सेल्स नॉट ऑन कॉस्ट, बट इन दिस सम ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट. ओके. तो इसका क्या करना है दैट आई विल टेल यू व्हेन वी आर सॉल्विंग द सम. ओके. अ पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट टोटल स्टॉक. ओके. टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, दैट इज योर स्टेप 1. Then amount of claim, that is your step 2. And they have asked you something extra this time. Loss suffered due to under insurance. ठीक है. ये भी कैलकुलेट करना है. तो दिस इज द न्यूनेस इन द सम. क्वेश्चन समझ में आया सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Okay, fine, great. Okay, question is clear. Chalo, very good. So do we need a trading account here? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है? कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है? या नो, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट. या वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड भूमि, या वेरी गुड खुशी. हाँ, ठीक है, फाइन. तो स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट विद दिस. प्रिपेयर योर व्हाट यू कॉल्ड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. ठीक है.
Let me prepare that. Memorandum trading account. Okay, a small one. इसमें yeah. Okay, start. Give the heading. Memorandum trading account. Memorandum trading account. Write the time period. 1st January 2015 to आग कब लगी? 31st March 2015 को. So it's a period of less than 12 months. Okay. Start with opening stock. Opening stock कितना है? 1,80,000. Then go to purchases. Okay, purchases कितना है? 7,80,000. Okay. Then carriage inward. Carriage inward is how much? 24,000. Then sales. Sales trading account credit how much? 7 lakh, no, 5,40,000. That is my sales. Okay. Next is what? Commission on purchase. Okay. Commission on purchase. How much? It is 2%. Okay. So calculate karo. Okay. How much? 2% of 7,80,000. Okay. So 7,80,000 का 2% कितना हुआ? 15,600. ओके. नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. हाँ, टू जीपी. ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई एम डूइंग अ वर्किंग नोट ईयर डाउन. हाँ स्टूडेंट्स, इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो अपने पास है. कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. सो राइट डाउन. इज हाउ मच? GP percentage is how much? 50%, but on cost बोला है, जबकि it should be on sales. ठीक है. या तो थोड़ा दिमाग लगाओ. ये बेसिक फॉर्मूला यूज करो मैथ्स का, C+P=S वाला. ओके. तो ये लोग ने क्या बोला है? इट इज 50% ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट इज द बेस. तो बेस इज ऑलवेज 100. दिस इज 50. तो सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? 150. ओके. दैट इज gross profit percentage is, yes, 150% on, I mean, sorry, is, yeah, 50 divided by 150 into 100. अब आगे जाएगा ये ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स पे. हाँ, सॉल्व करो इसको. सॉरी, 50 divided by 150, 50 divided by 150 into 100. 33.333. 33.333%. This is my answer. My GP percentage is 33.3333. Am I clear? समझ में आया सबको ये? Is this calculation clear to everyone? Yeah, Khushi, very good. Diksha, very good. ठीक है. अब इजी हो गया सम. अब कैलकुलेट करो. अब तो अपने को पता है ना कैसे लेना है. 33.33% ऑन सेल्स. सेल्स कितना है? 5,40,000. Okay. Many students will do mistake in this sum. Okay. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देने का एग्जाम में है. ओके. 5,00,000 कैलसी पे कैसे लोगे? 5,40,000 मल्टीप्लाइड विथ 33 पॉइंट, गो अप टू 4, या डेसिमल डिजिट. या
33.3333, ज़्यादा भी जाओगे तो भी चलेगा, वो वैसे भी राउंड ऑफ हो जाएगा. 1,79,999.9999. Okay, because you're going up to more than 4 decimals, that is why the answer is getting round off. This is best way to do calculate. तो कितना हुआ ये? 1,80,000. Okay, so right here 1,80,000. Okay, yeah, very good खुशी. ठीक है, आप क्या करोगे? या क्लोज, आई मीन क्लोज द लेजर. या so when you close your ledger, 1,80,000 plus 15,600 plus 24,000 plus 7,80,000 plus 1,80,000, कितना हुआ? 11,79,600. 11,79,600. Okay, 11,79,600 minus the credit side, that is my sales, 5,40,000. So my answer is 6,39,600. Okay, so that's my stock on date of fire. Yeah, very good Diksha, very good Khushi, very good. Okay, तो ये रहा मेरा आंसर. Right here, buy stock on date of fire. Okay, buy stock on date of fire. Till here it is clear to everyone. समझ में आया? Everyone, समझ में आया कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? हाँ, चलो ग्रेट, वेरी गुड. ठीक है, अब क्या? लेट अस गो एज पर द स्टेप विच इज आस्क्ड हियर. पहले क्या पूछा है? कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. टोटल लॉस ऑफ स्टॉक मतलब एक्चुअल लॉस पूछा है. ओके, सो राइट हियर स्टेप 1 पूछा है आपको. स्टेप 1. ओके, स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल लॉस या टोटल लॉस. स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल लॉस. ठीक है, right? Let's prepare this. Yeah, particulars and amount or rupees. First, stock on date of fire. Stock on date of fire. Date of fire. So, what is the 6,39,600? 6,39,600. Next, less salvage. Okay. So, how much was my salvage? My salvage is 4 lakh, no, 1,24,080. Okay, 1,24,080. Okay, and balance is my actual loss. Balance is okay, actual loss. ठीक है, yeah. So minus 1,24,080, 5,15,520. Yeah, 5,15,520. Okay, yeah. दीक्षा एंड खुशी, या वेरी गुड. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का. सेकंड क्या पूछा है? क्लेम पूछा है. तो स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ क्लेम. ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम आप कैसे करोगे? एवरेज पॉलिसी बोला इज एप्लीकेबल, है ना? एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. Okay, so when average clause is applicable, how do you calculate claim? We apply the formula. What is the formula? Policy value upon stock on date of fire. Stock on date of fire into actual loss. Okay, actual loss. So policy value कितना था क्वेश्चन में? 4,80,000, right? 4,80,000. Stock on date of fire 6,39,600. Actual loss 5,15,520.
Okay, solve this. 4,80,000 divided by 6,39,600 into 5,15,520. तो 3 लाख राउंड ऑफ कर दो. 3,86,881.8 मेक इट 882. So my answer is 3,86,882. So this is the claim amount. ठीक है. So this is the second part of the question. Done. ठीक है. और लास्ट में क्या पूछा है? थर्ड वाला भी पूछा है ना. लॉस सफर ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस. ओके. थर्ड वन. ये कुछ नया है इस सब में, पहले हमें किया नहीं है. करेक्ट. या थर्ड पार्ट. लॉस सफर्ड ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस. अंडर इंश्योरेंस. ओके. सो आपको कितने का नुकसान हुआ है ये पता करना है ना. एक्चुअल नुकसान. देखो आपका लॉस कितने का है. व्हाट इज योर लॉस. एक्चुअल लॉस 5,15,520. ओके. सो राइट हियर एक्चुअल लॉस 5,15,520. ओके. ये हमको कहाँ से मिला. स्टेप 1 से मिला. ठीक है. फिर स्टेप 2 से हमको क्या मिला. क्लेम मिला. ओके. क्लेम कितना आया. 3,86,882. दोनों का डिफरेंस लो. यू विल गेट लॉस सफर ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस. ओके. लॉस ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस. समझ में आया एवरीवन. ओके. this one. Okay. What? 5,15,520 minus 3,86,882. 3,88,882. 1,28,638. 1,28,638. ओके. सो एक्चुअली इतने का नुकसान हुआ है ना. क्लेम आपका पैसा तो मिल गया ना. तो एक्चुअल लॉस आपका इतना है. ठीक है. इज दिस क्लियर. फाइन. 5,15,520 का लॉस है. बट आपको उतना क्लेम दे दिया ना इंश्योरेंस कंपनी ने. 3,86,882 का. तो डिफरेंस जो है वो आपका लॉस ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस है. ओके. क्लियर.